हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो आरएसी का है, जो कि आपके आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में ट्रेड के लिए उपयोगी होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेंट बिकम्स हाईली प्रेशराइज्ड इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन कंप्रेसर। सो ए इज द राइट आंसर। Which line is used to transfer refrigerant from compressor to condenser? So suction line, discharge line is the answer, क्योंकि कंप्रेसर के एग्जिट पे डिस्चार्ज लाइन और कंप्रेशन के इनलेट पे आपका सक्शन लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स रेफ्रिजरेंट obtained from the evaporator is transferred to the compressor? That is, this time this is a suction line. Then next, which of the following is the costlier item in a refrigeration system? That is, compressor is the costlier item in a refrigeration system. The highest temperature during the cycle in a vapor compression system occur in, again answer is compressor. In a TH diagram, ये 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 से 2 के बीच में जो प्रोसेस होती है ये होती है कंप्रेसर की वजह से। कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ सबसे ज़्यादा है 2 पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेफ्रिजरेंट? SO2 रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, CO2 रेफ्रिजरेंट है, बट नाइट्रोजन इज़ नॉट अ रेफ्रिजरेंट, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। The highest temperature during the cycle in a vapor compression system, अगर ये कर चुके हैं 13 कर चुके हैं 14, which of the following is called cooling unit? Condenser, compressor, evaporator and expansion valve. So the option C is the right answer. Evaporator is called the cooling unit. In which of the following conversion state heat is absorbed in vapor compression refrigeration system? So from liquid to solid, vapor to liquid, vapor to solid, and liquid to vapor. Liquid to vapor, option number D is the right answer. The minimum temperature in a vapor compression unit in the operation cycle is, अब इसमें मिनिमम टेम्परेचर पूछा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आफ्टर वॉल्व, आफ्टर एक्सपेंशन वॉल्व जो होता है वहाँ सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है। जैसे कि आपको ये ग्राफ में अगेन केस में ये वाला पॉइंट जहाँ से एग्ज़िट होता है एक्सपेंशन वॉल्व, वो आपका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, विच साइड ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड इवेपोरेटर इज़ यूज्ड? हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड और हाई टेम्परेचर साइड, तो लो प्रेशर साइड इज द राइट आंसर। लो प्रेशर साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर विथ पिस्टन इज यूज्ड इन कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व। तो कंप्रेसर में अपन यूज़ करते हैं पिस्टन इन अ सिलेंडर। जनरली डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें पिस्टन वाले ही कंप्रेसर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, इन द रेफ्रिजरेटर is humid evaporated, the refrigeration effect will be, इसमें आपका H1 माइनस HF3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे कि TS डायग्राम में ह्यूमिड इवेपोरेटर 1 2 3 एंड 4 तो आपका H1 माइनस HF3, इसमें क्या होगा, जैसे अपन TH डायग्राम में बनाते हैं
2 3 एंड 4। तो थर्ड और फोर्थ क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो थर्ड वाला पॉइंट में HF होता है, वही आपका H4 भी होगा, इसलिए HF को H4 दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपका H1 और H4 का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इन दिस केस वही आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन टोटल enthalpy नहीं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। बी इज द राइट आंसर। Dash is used to prevent the water particles from depositing in an evaporator in vapor absorption refrigeration system। तो इसमें जनरेटर, एनालिस्ट, एब्जॉर्बर और कंडेंसर। तो ऑप्शन नंबर बी एनालिस्ट इज द राइट आंसर। थ्रू विच ग्राफ इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन रिप्रेजेंट्स। जैसा कि आपको इन्होंने बताया, TS डायग्राम में बनाते हैं अपन क्या, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया था। ये होता है TS, वन टू थ्री फोर साइकिल, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक, diluted ammonia is changed into concentrated ammonia in the dash of vapor absorption refrigeration system, that is option number B in a analyst। Which part is not required in absorption refrigeration system, that is compressor। absorber होता है, condenser होता है और generator होता है। In which form of water is used in absorption refrigeration system? In the form of absorbent factor। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। The good solvent with carbon particles used for chemical cleaning in refrigeration system is tetrafluoroethane, trichloroethane, trichloroethylene। B is the right answer, trichloroethylene is use करते हैं। So thank you for watching। If you like this video or if you want any more this type of video, so please comment below। Thank you for watching।